Assalamu alaikum students. Here is Professor Abdul Razak Chaudhary and you are watching my channel Kashan Services Academy. Dear students, this is the lecture 2 about intonation. We have delivered the first lecture about intonation and that is the lecture 2. The book is Phonetics and Phonology, BS English 3. Here is an outline of phonetics and phonology, and I am delivering the lectures according to this outlines. We have discussed the weak forms in two lectures and then delivered the first lecture of intonation, and today is the second lecture about intonation. Students, we have discussed that what is intonation in the first lecture in very detail, and today we will discuss the main functions of intonation. So there are different functions performed by intonation. One is grammatical function, then accentual function, then attitudinal function, mood and personality function, new information, meaning function, sociolinguistic functions, discourse function, indexical function. So these are 9 different functions and we will discuss them one by one. The first is grammatical function. देखें, जैसे पंक्चुएशन है रिटन फॉर्म में, ऐसे ही इंटोनेशन है स्पोकन फॉर्म में. जैसे हमें पंक्चुएशन से पता चलता है कि कहाँ पर कौन से इमोशंस हैं. देखिए सेमी कॉलन लगा होता है तो हमें पता चलता है कि यार कोई इमोशंस के जो है वो फीलिंग्स हैं, लाइक हुर्रा, लॉस, ओह, तो इनके साथ लगा होता है सेमीकोलन. वहां से पंक्चुएशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सी इमोशन है. ऐसे ही जो इंटोनेशन है, जो राइज एंड फॉल है, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इंटोनेशन क्या जो है वो मैसेज दे रही है. तो इंटोनेशन इज यूज्ड टू सिग्नल द सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सिग्नल करती है. मसलन कहाँ पर बात खत्म हो रही है, वहां पर देखें, जब रिटन फॉर्म में आप करते हो तो आप फुल स्टॉप लगा देते हो तो पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बंदे की बात खत्म हो गई है या वन सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो जब आप बोलते हो स्पीकिंग में इंटोनेशन से पता चलता है कि नो आई हैव कंप्लीटेड माय टॉक, इट्स योर टर्न टू स्पीक. तो वहां से फुल स्टॉप का पता जो है वो इंटोनेशन से पता चलता है. तो दैट सिग्नल्स द सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. The listener is being able to recognize the grammar and syntax structure of what is being said by using information contained in intonation. Intonation से उसको पता चलता है कि कहाँ क्लास खत्म हो रही है, कहाँ पर फ्रेज है, कहाँ क्लास है और कहाँ सेंटेंस कंप्लीशन है. Everything is conveyed by intonation during speaking. Intonation helps identify grammatical structures in speech rather as punctuation does in writing. वो काम जो punctuation writing में करती है, spoken में intonation करती है. We use intonation to mark the beginning and of grammatical units such as class and sentence. We do this by tonality. We also use intonation to distinguish class type सच एज क्वेश्चन वर्सेस स्टेटमेंट. हमें ये भी इंटोनेशन से पता चलता है कि जो बात की जा रही है वो क्या कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेटमेंट है. एंड टू दिस एम्बिगुएट वेरियस ग्रामेटिकली एम्बिगुअस स्ट्रक्चर्स द सिंटैक्टिक फंक्शन. ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं बाय इंटोनेशन. वी डू दिस मेनली बाय टोन. हम ये टोन से करते हैं. इंटोनेशन इज यूज टू रिकग्नाइज number one, the placement of boundaries between phrases, clauses and sentences. Number two, difference between questions and statements. दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें. एक तो पता चलता है कि क्या ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है. जैसे देखिए हमने डन में देखा कि डन जो है वो वर्क कंप्लीशन के लिए यूज़ होता है, डन प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है, और डन जो है वो एक और भी था, क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है कि डन, क्या डन हो गया. तो इसी तरीके से ये देखें कि ये वही बात वो बताना हमें चाह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, शी ड्रेस्ड एंड फेड द बेबी. अब यहाँ से हमें दो मीनिंग्स कन्वे होते हैं. नंबर एक कि उसने बेबी को ड्रेस भी किया और फेड भी किया, और दूसरा ये है कि वो ड्रेस उसने खुद किया और फेड बेबी को किया. शी ड्रेस्ड हर सेल्फ एंड देन फेड द बेबी. दिस इज एक्चुअल मीनिंग एंड दैट इज कन्वेड बाय इंटोनेशन.
So one was the grammatical function and the second is accentual function, कि कौन से वर्ड जो हैं वो stressed हैं और कौन से unstressed हैं. That is accentual, accent function. The term accentual refers to accent. Intonation helps to show what information in an utterance is new and what is already known. क्योंकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्ट्रेस किया जाता है और जो पहले से मालूम होती है उसको स्ट्रेस नहीं किया जाता. We use it to bring some parts of the message into focus and leave other parts out of focus. What is new, what is important, that we focus by intonation. To emphasize or highlight some parts and not others. किसी खास चीज़ को अगर आपने हाईलाइट करना है तो उसको एम्फसिस करना है, एम्फसाइज करना है, तो दैट इज डन बाय इंटोनेशन. We do this by tonicity and by the placement of other accents. This is one of the most important functions of English intonation. We combine accentuation with the choice of tone to present some longer stretches of the message as constituting the foreground of the picture we paint, while leaving the other stretches as the background. कुछ को हम इतना स्ट्रेस नहीं करते, वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं. कुछ को हम ऐसे पेंट करते हैं कि जैसे वो फोरग्राउंड हो. तो दैट इज एवरीथिंग डन बाय इंटोनेशन. द थर्ड फंक्शन इज एटीट्यूडनल फंक्शन. हमें पता चल जाता है कि एटीट्यूड क्या है, इमोशंस कैसे हैं. इंटोनेशन इज यूज टू कन्वे एटीट्यूड, इमोशंस और फीलिंग्स. दिस एड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मीनिंग टू स्पोकन लैंग्वेज. फॉर इंस्टेंस, the same sentence can be said in different ways to express happiness, gratitude, anger, boredom. चार देखें एटीट्यूड बता दिए और सेंटेंस सेम होगा. उसकी इंटोनेशन से पता चलेगा कि क्या ये हैप्पीनेस के लिए बोला गया है या ये एंगर के लिए बोला गया है. सेंटेंस सेम होगा. सो दैट इज अबाउट एटीट्यूड और मूड. The third is mood and personality. This determines if you will be considered charming or rude, confident or nervous, uninformed or unfamiliar. तो ये भी सारा कुछ जो है वो इंटोनेशन से पता चलेगा. न्यू इन्फॉर्मेशन. इन स्टैंडर्ड इंग्लिश द नाउन्स यूजुअली कैरी द वेट ऑफ सेंटेंस व्हेन एवरीथिंग एल्स इज इक्वल. जब सब चीज़ें बराबर हों तो नाउन्स जो हैं वो लेते हैं carry the weight of sentences. Like example, dogs eat bones. After the information has been introduced, the intonation shifts over to the verb. पहले देखिए हमने इंफॉर्मेशन स्ट्रेस किया डॉग्स को और बोन्स को, हमने वर्ब को छोड़ दिया. अब जब पहले फिक्रे में डॉग्स ईट बोन्स है तो दूसरे फिक्रे में दे आ गया. दे को हमने अब स्ट्रेस नहीं किया बिकॉज दे इज, वी ऑलरेडी नो अबाउट द दे मीन्स डॉग्स, दे ईट दैम. तो अब हमने देम जो है ये बोन्स के लिए यूज हुआ और दे जो है डॉग्स के लिए यूज हुआ. नो, वी शिफ्ट द स्ट्रेस टुवर्ड्स द new information, that is eat. So new information is highlighted through intonation. Now meaning function, as we have already discussed that the change of intonation lead towards a change of meaning. Now we will take a single sentence and we will study that how meanings are changed by the change of intonation. Exercise to demonstrate a variety of meanings through intonation change. Take a single sentence, try stressing each word in turn, मतलब बारी बारी आपने हर वर्ड को स्ट्रेस करते जाना है, and see the totally different meanings that come out. Example 1, I didn't say you stole my red hat. I didn't say you stole my red hat. ये है एक स्टेटमेंट. तो इसमें फर्स्ट में हम स्ट्रेस करते हैं पहले वर्ड को, दैट इज आई. सेकंड में हम करेंगे डिड को, थर्ड में करेंगे से को, फोर्थ में करेंगे यू को. इस तरह हम इसको चलाएंगे टर्न बाय टर्न. तो पहले में देखें आई. It means your focus, your stress is on I. The meaning contains the idea that someone else said it, not me. I didn't say means I didn't say means मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा. Someone else said it, not me. Second, I did not say you stole my red hat. Strong anger and denial of the fact. I did the meaning जो है वो कन्वे कर रहा है. The third is I did not say you stole my red
हैट मीन्स कि इसमें से को वो जो है डिनाई कर रहा है, बट आई इम्प्लाइड इट दैट यू डिड यू, मतलब मैंने ये कहा नहीं है कि तुमने किया है, से पर फोकस आ गया, नो यू पर फोकस आ गया। आई वॉजंट एक्यूजिंग यू मीन्स कि यू पर फोकस आ गया, यू नहीं किसी और ने, आई नो इट वॉज समवन एल्स। एंड सेकंड में आ गया माई पर, तो देखें इट आई मीन दैट यू स्टोल समवन एल्स इज रेड हैट नॉट माई। The third is red means I said that you stole my blue hat, red पर अब फोकस आ गया, I didn't say you stole my red hat मीन्स कि तुमने रेड हैट नहीं चुराया, तुमने ब्लू हैट चुराया। तो लास्ट पर हैट पर आ गया फोकस। इसका मतलब क्या बनेगा, आई सेड दैट यू स्टोल माई रेड बैट, यू मिस अंडरस्टूड माई प्रोनाउंसिएशन, आपने रेड है बैट को चुराया है, हैट को नहीं चुराया। तो ये इस तरीके से change of pronunciation, change of meaning. Second, the seventh one is a socio-linguistic function. इंटोनेशन गिव्स द क्लू, ये हमें क्लू देती है सोशियो लिंग्विस्टिक फंक्शन का, कि जो बोलने वाला है वो कहाँ से आया है, उसका सोशल लेवल कैसा है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, बच्चा है क्या है, एज कितनी है, पर्सनैलिटी कैसी है, इंडिविजुअल फीचर्स उसकी, इडियोसिंक्रेसी उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें सोशियो लिंग्विस्टिक फंक्शन जो है ये हमें इंटोनेशन से मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द डिस्कोर्स फंक्शन, की इंटोनेशन से हमें पता चलता है डिस्कोर्स का, like intonation signals how sequence of clauses and sentences go together in spoken discourse to contrast or to cohere. It functions like the division of writing text into sentences and paragraphs. देखिए ना, वहाँ पर रिटर्न में तो आपको पता चल जाता है फुल स्टॉप से ये सेंटेंस है, और नए पैराग्राफ से लाइन आप छोड़ते हो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन स्पोकन में आपको इंटोनेशन से इन सारी चीज़ों का पता चलता है। It enables us to signal whether or not we have come to the end of the point we are making. तो इंटोनेशन से पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं क्या उसका एंड आ गया है, या अभी हमने और बात करनी है, या हमारी बात कंप्लीट होगी, या अब नया बंदा बात करे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंटोनेशन से जो है वो कन्वे होती है। वेदर वी वांट टू कीप टॉकिंग और we are ready to give another speakers our turn, so that is everything done by intonation. Indexical function means identity का पता जो है वो intonation से चलता है, कि एक लायर है तो उसकी ख़ास किस्म की intonation होगी, लायर लगेगा वो। एक न्यूज़ कास्टर है तो उसकी इंटोनेशन इस तरीके से, एक क्लर्जी मैन है तो उसकी इंटोनेशन, टीचर है तो उसकी। तो ये just as with other pronunciation features, intonation may act as a marker of personal or social identity. What makes mothers sound like mothers, lovers sound like lovers, liars sound like liars, clergymen sound like clergymen, newsreaders sound like newsreaders, officials sound like officials, partially their characteristic intonation. Dear students, if I summarize the whole lecture about the functions, so these are different functions we have discussed. These are 9 functions, and now one important thing, that is about kind of tones, intonation pattern. We will discuss all these in a separate lecture. So that is all about the functions of intonation.